नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक्स स्पेस की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कुछ डेफिनेशंस कर रहे थे, उसी कड़ी में कुछ और डेफिनेशंस को देख लेते हैं। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, लेट एक्स टी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, a set Na contained in X is called neighborhood of point A belongs to capital X if there exists an open sphere SRA contained in Na for some r greater than 0. For example, first, every open sphere is neighborhood of each of its points. Second, on R, open interval a comma b is neighborhood of each of its points. और ये डेफिनेशन देख लेते हैं। ओपन सेट, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, देन ए सेट जी कंटेंड इन एक्स इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। और G contained in X is said to be open in X, D if for each A belongs to G there exists R greater than 0 such that SRA contained in G. For example, every open sphere is an open set. Properties of open set. First property, every open sphere is an open set but converse is not true. Second, let XD be a matrix space. A subset of X is open if and only if it is union of open sphere. और थर्ड प्रॉपर्टी है, let XD be a matrix space, then first phi is open, second X is open, third union of arbitrary collection of open sets is open, and fourth intersection of a finite number of open sets is open. और fourth, in a matrix space xt for every pair of disjoint points x, y belongs to X, there exist disjoint open sets G and H such that X belongs to G and Y belongs to H. Equivalent matrix. Two matrix D1 and D2 on the same set X are said to be equivalent if every open set in X, D1 is open in X, D2 and vice versa. For example, let XD be a matrix space and D1 X, Y is equal to minimum 1, dxy for all X, Y belongs to X. Then X D1 is a bounded matrix space and D1 is equivalent to D. Second, let XD be a matrix space and let D1 X, Y is equal to D X, Y divided by 1 plus dx, y for all X, Y belongs to X. Then D1 is bounded on X and D1 is equivalent to D. Limit point. Let XD be a matrix space. A point P belongs to capital X is said to be a limit point of the set A contained in X if every neighborhood of P contains a point of A different from P, or a point P belongs to capital X is said to be limit point of A contained in X if for each r greater than 0 the open sphere R SRP contains a point of A other than P. और देखें ड्राइव्ड सेट की क्या डेफिनेशन है।
derived set of all limit points of A contained in X is called derived set A, and it is denoted by dA or A dash. और क्लोज सेट की क्या डेफिनेशन है? ए सबसेट ए ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स टी इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ ए कंटेन्स all its limit points. Properties of closed set. First property, in a metric space XD, a subset F contained in X is closed if and only if its complement is open. Second, in a metric space XD, each closed sphere is closed set. Third, let XD be a metric space, then first phi is closed, second phi X is closed, third intersection of arbitrary family of closed sets is closed, and fourth union of finite family of closed sets is closed. अब हम देखें सबस्पेस की डेफिनेशन. सबस्पेस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस. एक्स डी कोई हमारे पास मेट्रिक स्पेस है, उसके सबस्पेस की क्या डेफिनेशन है? लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस and let y contained in X, then the mapping dy on y defined by dy x comma y is equal to dx comma y for all x comma y belongs to y is called metric induced on y, and the metric space y dy is known as subspace of xd. एग्जाम्पल देखें. लेट आर डी बी ए यूजुअल मेट्रिक स्पेस फॉर क्यू कंटेंट इन आर. डिफाइन ए मेट्रिक डी वन ऑन क्यू बाई डी वन एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू क्यू. देन क्यू कोमा डी वन इज ए सबस्पेस ऑफ आर डी. और एक रिजल्ट देखें. लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड वाई इज कंटेंड इन एक्स, देन ए सेट ए ऑफ वाई इज ओपन इन वाई डी वाई इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सेट जी ओपन इन एक्स कोमा डी सच दैट ए इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई. सेकेंड, लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड y is contained in X, then a set B of y is closed in y comma dy if and only if there exists H closed in X comma D such that B is equal to H intersection y. एडहेरेंट पॉइंट. इसको एडहेरेंट पॉइंट भी बोल देते हैं और कॉन्टैक्ट पॉइंट भी बोल देते हैं. क्या डेफिनेशन है इसकी? लेट x comma d be a metric space and let S is contained in X, a point P belongs to capital X is called adherent point of S if every neighborhood of P contains a point of S, or a point P belongs to capital X is called an adherent point of S if each open sphere centered at P contains at least one point of S. Closure of a set. The set of all adherent points of S called closure of S. It is denoted by S के ऊपर हम बार लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा क्लोजर ऑफ S. प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर ऑफ ए सेट. First, let X T be a metric space. If S contained in X, then S closure is equal to S union derived set of S. Second, let X D be a metric space and let A and B are arbitrary subsets of X. Then, first, if A is subset of B, implies that A closure is subset of B closure. Second,
A intersection B closure is subset of A closure intersection B closure. And third, A union B closure is equal to A closure union B closure. और थर्ड को देखें, let A be a subset of metric space XD, then first A is closed if and only if A closure is equal to A. Second, A closure is the smallest closed superset of A. Third, A closure is intersection of all closed superset of A. या इसको हम कह सकते हैं contained in A. Superset of A means contains A. और एक डेफिनेशन और देखें, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट. Let XD be a metric space and let A is subset of X. A point P belongs to A is said to be an interior point of A if A is neighborhood of P. और दूसरे शब्दों में इसकी क्या डेफिनेशन है? Let XD be a metric space and A is subset of X. A point P belongs to A is called interior point of A if there exists R greater than 0 such that S R P contained in A. Interior of a set. The set of all interior points of A is called interior of set A and it is denoted by A के ऊपर एक ये स्मॉल जीरो लगा देंगे, ये इंटीरियर ऑफ ए है. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर ऑफ सेट ए. फर्स्ट प्रॉपर्टी, in metric space XD, the interior of set A contained in X is the largest open subset of A. Second, in metric space XD, if A contained in X, then first phi का इंटीरियर phi होगा, x का इंटीरियर x होगा, और थर्ड x is open if and only if A interior is equal to A. Third, if A and B are two subsets of metric space XD, then A is subset of B implies A interior is subset of B interior. Second, A union B interior is superset of A interior union B interior. Third, A intersection B interior is equal to A interior intersection B interior. अब हम देखें डेंस सेट की डेफिनेशन. ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डेंस सेट और एवरीवेयर डेंस. everywhere dense set. Let XD be a metric space and let A is subset of X. Then the set A is said to be dense in X if A closure is equal to X. Dense in itself. Let XD be a metric space and let A is contained in X. Then set A is said to be dense in itself if A contained in its derived set. Nowhere dense. Let XD be a metric space and let A is contained in X. Then the set A is said to be nowhere dense relative to X if A bar कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स. ए बार का हम कंप्लीमेंट ले लें और वो एक्स आ जाए तो उसको हम कहेंगे नो वेयर डेंस. परफेक्ट सेट. लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स. देन सेट ए इज सेट टू बी परफेक्ट इफ ए इज इक्वल टू ए ड्राइव्ड सेट. यानी कि ए अपने ड्राइव्ड सेट के बराबर आ जाए तो वो जो सेट होता है वो परफेक्ट हो जाता है. और एक और डेफिनेशन देखें, सेपरेबल स्पेस. ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेट टू बी सेपरेबल इफ इट कंटेन्स काउंटेबल डेंस सबसेट. एक्सटीरियर पॉइंट. लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड
A is subset of X, then a point X belongs to capital X is said to be an exterior point of set A if it is an interior point of A complement. That is, there exists SRX contained in A complement. तो ये डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट की। फ्रंटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेट टू बी फ्रंटीरियर पॉइंट ऑफ ए if it is neither interior point nor exterior point of E. Or boundary point, if frontier point belongs to A, then it is called boundary point of A. Convergence in metric space. Let XD be any metric space. The sequence AN of points of X is said to be converge to a point A of X if for each epsilon greater than 0 there exists positive integer m such that d an comma a less than epsilon for all n greater than or equal to m. That is, d an comma a tends to जो d है, ये जो डिस्टेंस है ए एन से और a तक की, ये 0 के ऊपर जाएगी जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो ये कन्वर्जेंस इन मेट्रिक स्पेस है।